Okay. So we can see in the brain a very small structure. We can see this is a very small structure that is pineal gland. ये ब्रेन के अंदर है. The deep inside एक छोटे पी के आकार की जो ग्लैंड है, inside the brain, right? Right now, no need to discuss the anatomy of this. इसकी anatomy की जरूरत नहीं है. Right now, what we want to discuss, अभी हम क्या समझ रहे हैं कि what is the importance of this pineal gland. आखिर इसकी क्या जरूरत है हमें. Many person also telling it third eye. जैसे हमें लगता है पिट्यूटरी ग्लैंड इज थर्ड आई, बट मेनी पर्सन थिंकिंग पिनियल ग्लैंड है सहस्त्रार चक्र, और some person are telling it third eye. Okay, whatever. तो यहाँ पर the pineal gland is the gland who do the secretion of very important hormone, that is melatonin. यह मेलाटोनिन का निर्माण करती है. So this is the important. The pineal gland is the gland who is controlling sleep and wake cycle. This is the gland who is doing a deeper relaxation of the brain and the deeper healing. ये हमारे ब्रेन की, हमारे शरीर की बहुत ही डीपर हीलिंग करती है. So the pineal gland is the gland who set a rhythm. Rhythm means rhythm. We are sleeping in the night, getting up in the morning. We are having one habit. Okay, every day we sleep at the 11 o'clock or the 12 o'clock or the 10 o'clock. So we start getting sleep. And if you are getting in the morning 5 o'clock, the 6 o'clock or the 7 o'clock or the 8, that time automatically will get up. So that rhythm is set by pineal gland. Not only this, the monthly rhythm, seasonal rhythm, there are many different type of the rhythm set by pineal gland. इसे सर्केडियन रिदम कहते हैं कि आप यहाँ से कैलिफोर्निया गए, बाहर गए, आपको नींद नहीं आ रही, रात को 2:30 बजे नींद खुल रही है आपकी, क्योंकि वहां का टाइम जोन चेंज हो गया, तो आपकी बॉडी ठीक से भी है, वो पिनियल ग्लैंड के कारण है. सो पिनियल ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द सर्केडियन रिदम फॉर स्लीप वेक साइकिल, राइट. सो वी फील स्लीपी एट द नाइट एंड वी फील अलर्ट ड्यूरिंग द डे. अगर आप मुझे बोलो कि रात को 2 बजे उठ के मैं ऐसे आपसे बात करूं, ऐसे क्लास लूं, तो बहुत नींद आएगी उस समय, और आप भी सो जाओगे, 2 5 10 मिनट में सो जाओगे, क्योंकि वो सोने का समय है, वो हमारा सेट है, इट इज ऑलरेडी सेट. ओके. Many times when we are taking class at the night 10:30 11 o'clock, many persons sleeping in the class only, because the pineal gland already maintain the सर्केडियन रिदम. सुबह सुबह देखो कई लोग जो क्लास ज्वाइन करते हैं ना, डॉक्टर बोल की बिस्तर में से बिना निकले करते हैं ज्वाइन, ऐसे थोड़ा सा मोबाइल निकाल के क्लास ज्वाइन करते रहते हैं, वो कैमरा ऑन नहीं करते. फिर वो एक दिन एक व्यक्ति ने गलती से कैमरा ऑन कर दिया था, तो रजाई के अंदर ही घुसा हुआ था वो, है ना. सो दिस इज नो प्रॉब्लम. अरे वो तो छोड़ो, एक दिन
One day class was going on. One person took mobile in the bathroom and he was taking bath. Video was on and he removed all the clothes. Immediately because in the Zoom we can remove anyone, right? We can switch off the video of anyone. Then what did after that, मैंने जब वीडियो एडिट किया वो पार्ट मैंने हटाया एडिट करके आई रिमूव दैट पर्सन फॉरगॉट टू स्विच ऑफ द वीडियो और बस अपनी नेचुरल अवस्था में बाथरूम में नहा रहे थे, है ना. लोग पीपल आर फॉरगेटिंग, सो आई रियलाइज like so right now let's come back to the circadian rhythm or the sleep wake cycle or the biological clock. ये कौन बनाता है? ये बनाती है हमारी pineal gland. So we can tell circadian rhythm or the biological clock or the seasonal rhythm. ये कौन बनाता है? ये सब pineal gland. So pineal gland is very much important. Okay. Pineal gland get active. Get activated in dark room. Remember me, very important. Then it secrete melatonin. जब अंधेरा होता है तब ये काम करती है, right? If there is a light, melatonin secretion, the secretion of melatonin get decrease. तो ये कम हो जाता है मेलाटोनिन का सीक्रेशन. So we feel sleepy due to pineal gland in the night, है ना? And be awake in the morning due to pineal gland. हम सोते भी इसके कारण है, जगते भी इसके कारण है. So pineal gland connected with the sunlight, with the dark light, with the stress. If you are stressful and you are not able to sleep, pineal gland is not secreting enough melatonin. अगर आप चाहते हो कि आप हमेशा यंग बने रहो, if you want to be young all the time, you have to bring lots of melatonin. Melatonin is the hormone bringing youthfulness, preventing aging, working like an antioxidant. So this is the key of youthfulness. ये चाबी है जवान बने रहने की. So melatonin is the पहुंच गए भाई. So melatonin is key of anti-aging. ये हमारी एंटी एजिंग की चाबी है. So in the brain we are having pineal gland. This is the pineal gland. It is also influencing hypothalamus of the brain.
and the pituitary gland of the brain. If pineal gland is healthy, it will give good energy to the hypothalamus, good energy to the pituitary gland. If the pineal gland is not healthy, then it will affect badly your hypothalamus and the pituitary gland. Result, disturb hormones. हमारा जीटीएच हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, एफएसएच, एलएच, ये सब डिस्टर्ब हो जाएंगे अगर हमारा पिनियल ग्लैंड ठीक नहीं है. In the children, it's a highly active. That's why children are sleeping too much. बच्चे बहुत सोते हैं. बच्चे 18 घंटे. When any kid is taking birth, sleeping all the time. Just getting up for drinking milk, then sleeping again. So pineal gland is very active in the childhood. As we are growing, it is becoming less active. In the old age, it is very least active. That's why in the old age, we are sleeping less. बुढ़ापे में हम सिर्फ 5 घंटे सोते हैं, 6 घंटे, कम सोते हैं, नींद नहीं आती और वो भी इंटरप्टेड स्लीप होती है. इन द ओल्ड एज देयर इज नो too much sleep. Very less people sleeping 8-9 hours. And even they're sleeping, interrupted sleep. They are getting up for urine or they are getting up because of some other reason in the old age. Pineal gland is less active in the old age and pineal gland is high active in the childhood. एकदम. तो इस तरह से इसका डीजनरेशन होता रहता है पिनियल ग्लैंड का. इट मीन्स pineal gland is very important to keeping your body cool, to keeping your mind calm, to removing all the infection, inflammation away and bringing very good immunity, youthfulness, anti-aging effect. pineal gland हमारे जीवन का च्यवनप्राश है ना. कहते हैं च्यवनप्राश खाओ. तो च्यवनप्राश का निर्माण ऐसे ही हुआ था. च्यवन ऋषि थे, उनके पास बहुत लोग गए कि लोग कुछ लोगों ने देखा इतने लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं. तो च्यवन ऋषि ने कहा कि मैं एक ऐसे रसायन की खोज करूंगा जिसको जो खाएगा वो वृद्ध नहीं पड़ेगा इतना जल्दी, धीरे धीरे पड़ेगा. उनके नाम से बना च्यवनप्राश. उसका नाम है च्यवनप्राश रसायन. द फुल नेम ऑफ द च्यवनप्राश इज च्यवनप्राश रसायन. रसायन मीन्स anti-aging. In the Ayurveda, there are many medicine with the name Rashayan. Brahma Rashayan, it is very good for brain, preventing the many medicine. Dashmul Rashayan, Chawanpras Rashayan, even Rashayan Churna. So Rashayan means anti-aging. So Chawanpras also anti-aging. Pineal gland upper anti-aging. If you activate the pineal gland, then it's very, very good to keeping your youthfulness. Now, in the previous class, we have discussed about cervical ganglion. From the urinary bladder 10, I told you to keep the forefinger, then UB10A, UB10B, UB10C, UB10A for upper ganglion, UB10B for middle ganglion, UB10C for lower ganglion. So the uppermost point UB10A for superior ganglion, that is supplying pineal gland. So if you just release the neck, do some massage of the neck, it is also very good for bringing good rhythm to pineal gland. तो आप जब गर्दन की किसी की ऐसे करते हैं ना तो वो सो जाता है, एकदम रिलैक्स हो जाता है. क्योंकि गर्दन से जो अपर गैंग्लियन हमारे upper cervical ganglion or the superior cervical ganglion going to the pineal gland, वो हमारे pineal gland को जाते हैं. Right? That's why pineal gland is very good for the patient suffering with insomnia or not able to sleep properly, or they are changing the country. So because of the change of country, their sleep pattern get disturbed. है ना. जो लोग इधर उधर कंट्री में ट्रैवल करते रहते हैं ना, उस चीज को जानते हैं. कि आप इस चीज को समझते हैं कि कंट्री बदलने पर नींद नहीं आती. हैव यू एक्सपीरियंस?
Those who are changing the country, going in the another country, they are feeling like that. Okay. So if your pineal gland is very good, many time na, yeah. If your pineal gland is very good, then you will sleep anywhere, anytime. आप देखोगे कई बार हमने ट्रेन में देखा है लोग ऊपर जो जनरल के डब्बे में जो ऊपर इतनी सी जगह होती है लोग उसी में लटक के सो जाते हैं एकदम उस पे भी लोग सो जाते हैं और लोग गद्दे पे भी नहीं सो पाते मोटे मोटे है ना. So the people are sleeping anywhere in the any difficult situation if a pineal gland is good. So now, if the pineal gland is not good, then lots of problem will start. Person will suffer with anxiety, depression, and multiple brain disorder. कोई भी ब्रेन की प्रॉब्लम आप लिख सकते जो क्या लिख सकते हो एंजाइटी सैडनेस डिप्रेशन वो सब लिख सकते हो आप जो जो आपको ध्यान आ जाए है ना. सो नाउ the pineal gland is not good, pineal gland is not working properly. So I told you the pineal gland is affecting hypothalamus and pituitary. Remember? मैंने भी बोला था कि हमारे हाइपोथैलेमस को भी प्रभावित करती है और हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को भी प्रभावित करती है. It means it's affecting the hormones. So it will disturb the puberty. Maybe पीरियड 9 साल में आ गया 12-13 साल की बजाय या 15 साल तक नहीं आया. अर्ली प्यूबर्टी और डिले प्यूबर्टी might happen because of the pineal gland. In the same way for the male are having problem in the getting the dadi mustache and all, or they are suffering with some hormonal issues. तो इस तरह से पिनियल ग्लैंड की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है. So now, if we want to bring the good balance in the biological rhythm, if you want to set our values, biological rhythm, if you want to activate our relaxation system of the brain, so a person is having lots of anxiety, depression, we can give the treatment of pineal gland. Even the people are changing the country because of the change of the country. Suddenly they are feeling I'm not able to sleep because of the time changing in the time zone. We can during that time also we can treat the pineal gland. So we have discussed the triple warmer 3 is the point for pituitary gland and the pineal gland both. So the first point will be triple warmer 3. Triple warmer 3 तो हमारा पहला point होगा. Remember location? Okay. तो ट्रिपल वार्मर 3 तो हमारा प्रथम बिंदु होगा. नाउ ट्रिपल वार्मर 1 भी तो रहने वाला. ट्रिपल वार्मर 1 भी इज द सीएमपी पॉइंट. तो 2 पॉइंट तो फिक्स ही हो गए हमारे. ट्रिपल वार्मर 1 भी एंड द ट्रिपल वार्मर 3. Now the special point of the pineal gland is urinary bladder 8. So I will show you the location. तो देखो हमारे सिर में है ये UV8. अब इसे कैसे पता करें कहाँ एग्जैक्टली. सो फर्स्ट आई विल टेल यू दिस इज द DU20. ये क्या है हमारा DU20 इसके पास है. सो फर्स्ट लेट्स नो एंड वेयर द DU20. द bladder meridian is passing on from both sides. Bladder meridian is passing from this side and the bladder meridian is passing from this side. So we can see this is the bladder 8 and here is also the bladder 8. तो एग्जैक्टली हम इसे कैसे समझें. द सेंटर पॉइंट इज DU20. तो देखो DU20 के ढूंढने के कुछ तरीके. Number 1, DU20 is the top of the head in general. Number 2, if we see both ear, look at ear are not like that. Ear are like that. So if we follow the direction of the ear, we will reach on the DU20. जहां पहुंचेंगे वही DU20 है. Third, from the hairline we have to go 5 chin back. So this is the hairline. Hairline को हम 4 finger रख देते हैं. तो because the length of the forehead is 4 finger, then the hairline starts. Because if some person is bald, not having hair, then it's very difficult to search the hairline.
So in this way, I'm searching the hairline. Okay. Now going 5, chun back. 3 chun, 2 chun. Total, this is the 5 chun. This is the location of DU20. तो DU20 मिल गया. तो DU20 के ढूंढने के 2 तरीके. 5 चुन चले जाओ, कानों की लाइन से चले जाओ, डायरेक्ट खोपड़ी के ऊपर आ जाओ. जो लोग TCM पढ़ रहे हैं उनको तो इसकी लोकेशन समझाई जाएगी, है ना. ओके. सो फ्रॉम द DU20, अगर DU20 से if we go half chun back, from the DU20 we go half chun back, that is the UB8 on both side. अब both side कितनी दूरी पर है, क्वेश्चन आता है कि इधर कितना जाओ उधर कितना जाओ. From the center line you can see that inner eyebrow इतना जाना है बस. सॉरी, इतना नहीं से थोड़ा ज्यादा जाना है, ये तो कम है. So from here we have to go 2 finger apart. How much apart? 1.5 chun apart. So from the DU20 we are going 2 finger apart and half chun back. Again I will repeat, from the DU20 we have to go 1.5 chun apart and a half chun back. That is the location of urinary bladder 8. I will show you the location once again. Look at here. So this is the location of DU20. So from the DU20 we are going 1.5 chun apart on this side, even 1.5 chun apart from this side, and half chun back, 0.5 chun back. So this is the location of DU bladder 8. Okay. Now we are stimulating this point for pineal gland. So our protocol will be like this: triple warmer 3, triple warmer 1V, and urinary bladder 8. In this way, there are the 3 points for pineal gland. Now one more point and the final point which I will tell you. एक पॉइंट और है इसका जो मैं आपको बताऊंगा अभी. So for understanding this point, let's go here. Okay, look at here. Here we can see urinary bladder 49A. Urinary bladder 49A. This point is located in the buttock and working on pineal gland. I already have told you the location of this point earlier. Quickly, I will tell you. एक बार मैं बता देता हूं.
ओके, थोड़ा वाईफाई की प्रॉब्लम हो रही, 1 मिनट। Okay, now it's okay. Audible. Okay. पॉज हो रहा है यार, एक ही मिनट। So we can look at the buttock area from the central line. If we go 3 chun apart, 3 chun means 4 finger. So this is the buttock area. ये हमारा buttock area है. On the top of the buttock, we are taking urinary bladder 49, and after the buttock ends, that is urinary bladder 50. Okay, forget the 50 right now. अभी 50 को भूल जाते हैं. Let's focus on the urinary bladder 49. Now from here we are taking 4 points. 1, 2, 3 and 4. That is called urinary bladder 49A, 49B, 49C and 49D. 4 point. All the 4 points are very good for genitals. All the 4 points are very good for genital, male-female genital problems. The first point, that is urinary bladder 49A, is the point for pineal gland. तो ऐसा कहते हैं कि बटक जो एरिया होता है ना, बटक एरिया स्टोर लॉट्स ऑफ स्ट्रेस. If you stimulate the buttock, release the buttock, the mind will get relaxed. Especially if you see the females store lots of stress in the buttock area. Okay. Done. This is the protocol of pineal gland. 2 point of triple warmer, 3 and CMP point, 1B. Then this 49A, urinary bladder 49A and UB8. So 2 point of UB, UB8 and 49A. We have to stimulate all the point. We have to do the even method on all the point. तो इस तरह से हमारा सारा का सारा. Now I want to add you one thing. We want to do the treatment of any gland like pineal gland, pituitary gland, thyroid gland. Always we can take cervical ganglion point. That is urinary bladder 10A, B, C, D. 10A, B, C. हमारे जो गर्दन में जो हमने सर्वाइकल गैंग्लियन के पॉइंट समझे थे, हम इन सब में डाल सकते हैं. Whether we are treating the pineal gland, pituitary gland, or other part of the face, or we are treating the thyroid gland, parathyroid gland, we can add cervical ganglion point. It's very important.
So right now there are only 4 points. Triple warmer 3, 1B, then urinary bladder 8 and urinary bladder 49A. तो ये हमारा खत्म हो गया पीनियल ग्लैंड। अब हम आते हैं हार्ट मेरिडियन पर। So just one more information for you. As per the Dr. Bowl, the point on the ear apex area, हमारे ईयर अपेक्स के पास में पाया जाने वाला बिंदु, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रिपल वार्मर 20. This is a triple warmer 20. This point is not on the ear, but at the level of ear apex. This is the point of hypothalamus. ये हमारा हाइपोथैलेमस का पॉइंट है। ट्रिपल वार्मर 20। ठीक है, बस इतना था। तो कभी भी हम हाइपोथैलेमस का ट्रीटमेंट कर रहेंगे तो हम इसे भी ले। सो जस्ट लुक एट ईयर, दिस ईयर अपेक्स। सो दिस द पॉइंट। ट्रिपल वार्मर 20 इज द पॉइंट ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है? व्हाट इज हाइपोथैलेमस? क्या होता है? अरुण जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं? हाइपोथैलेमस वो भाग होता है, अरे वो तो पता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड तो पिट्यूटरी की होती है। हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ मास्टर। ओके, जैसे उदाहरण के लिए आई विल गिव यू एन एग्जांपल। किसी को 10 डंडे मारो, है ना, ऐसे लाठी पड़ी, 10 डंडे मारो, तड़ा तड़ा, एक आध हड्डी भी फ्रैक्चर कर दो, चलो। दिस द केस नंबर 1। केस नंबर 2, किसी का बहुत खतरनाक वाला ब्रेकअप हो जाए, अब मजनू बना घूम रहा है इससे, विच इज मोर डेंजरस कंडीशन, टेल मी। है ना, डंडे मारे, दर्द को फील किया थैलेमस ने, और दिल ब्रेकअप हो गया, दर्द पेन को फील किया हाइपोथैलेमस ने। ओके, सो थैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन सेंस फीलिंग। थैलेमस इज फीलिंग द pain from some stimuli like we are hitting with a stick, and hypothalamus is feeling emotional pain, right? Or this, that is very dangerous. People are doing suicide, people are going in the very severe depression because of hypothalamus. अगर इंसान का हाइपोथैलेमस निकाल दो ना तो क्या होगा? चलो पहले थैलेमस निकाल दो, थैलेमस को डैमेज कर दो। इफ यू डैमेज द थैलेमस, कितने भी डंडे मारो उसको दर्द नहीं होगा, काट दो तो भी दर्द नहीं होगा। if you, if by chance it has happened because of some sudden injury, sudden accident, there is injury to the thalamus, so thalamus was not sensing the pain, then people, the person was enjoying, started enjoying the pain, फिर उसको ऐसे लोगों को दर्द में मजा आने लगता है, काटने में खुद को, दर्द नहीं होता उनको।
और हाइपोथैलेमस वो है जो पेन को फील करता है, इमोशनल पेन को फील करता है। तो ट्रिपल कॉर्मा 20 इज द point for hypothalamus. Okay. Now we are moving to heart. Okay, can we move to heart? So let's start the heart. Actually, heart is having very different shape. But for understanding purpose, we are making heart like this. Okay. Heart is having 4 chambers. The upper chamber is called atrium, and the lower chamber called ventricle. ऊपर के चैम्बर को कहते हैं एट्रियम, और नीचे के चैम्बर को कहते हैं ventricle. The chamber on the right side, we are telling right atrium or the right ventricle. On the left side, we are telling left atrium and left ventricle. In the short, we are telling RA means right atrium, RB, LA and LB. हम शॉर्ट में इसे ऐसा लिख सकते हैं. Okay. Then this is the heart. Okay. Let's make once again. Now, can you tell me? I am doing two color. Color number 1 and color number 2. What is the meaning of this? This is red color and this is blue color. क्या मतलब इसका? In the right atrium and the right ventricle, the left atrium and left ventricle. The right side we have impure blood or deoxygenated blood. In the left side we have pure blood or oxygenated blood. The meaning of pure blood having more oxygen. The meaning of impure blood means having less oxygen. ऑक्सीजन ज्यादा है तो प्योर ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन कम है तो इम्प्योर ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो हार्ट के राइट साइड में है इम्प्योर ब्लड और लेफ्ट साइड में है प्योर ब्लड. नाउ from the entire body, impure blood is coming here. This is the first entry. Impure blood come here. This is the entry area number 1.
Then this blood is going here. This is the entry area number 2. From the body, the blood is coming here in the right atrium. Then it's going in the right ventricle. That is the impure blood. Okay. So from the entire body, blood is coming from superior vena cava or SBC and inferior vena cava or IBC. Superior, it's coming in the right atrium, then this going in the right ventricle. The superior vena cava bringing blood from the upper part, maybe from the head, maybe from the arm, and the inferior vena cava bringing blood from all the lower part, maybe from liver, maybe from leg, maybe from all the organ below the diaphragm. तो पूरे शरीर से ब्लड आया. बेन तो सुना था, वेना केवा क्या होती है? बेन तो सुना सबने, है ना, दिस बेन दैट बेन. व्हाट इज वेना केवा? वेना केवा मीन्स बड़ी बेन. जैसे क्या होता है ना, जब पाइपलाइन आती है ना, जब नदी के पास से पानी फिल्टर होकर पाइपलाइन आती है, तो पहले बड़ी पाइपलाइन होती है, फिर छोटी पाइपलाइन होती है, फिर और छोटी पाइपलाइन होती है. फर्स्ट देयर इज अ बिगर पाइपलाइन. So the small veins coming, bringing blood from the legs, some bringing from blood from the liver. Then slowly in the last, they are draining the blood in the bigger vein that is called vena cava. तो जो बड़ी वेन होती है उसे बोलते हैं वेना cava. छोटी को वेन बोलते हैं, उससे भी छोटी को बोलते हैं वेन्यूल, है ना. वेन्यूल मतलब और छोटी. अब राइट वेंट्रिकल में आ गया. Now from the right ventricle, the question comes, how to purify the blood? Then from here, blood is going to lungs. यहां से ब्लड जाएगा लंग्स को. So this impure blood going to the lungs. Lung means pulmonary. The other word of lung is pulmonary. Okay. So from the pulmonary artery, this blood going to the lungs. लंग का एक ही काम है, सांस भरी और ऑक्सीजन मिला दिया उसमें. ऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड. लंग विल मिक्स ऑक्सीजन एंड सेंडिंग बैक टू हार्ट. चलो हो गया काम, आगे बढ़ो. सो नाउ lung will mix the oxygen. As the lung will mix oxygen, blood will become red again. So this is the again red, oxygenated blood. So lungs is receiving deoxygenated and mixing the oxygen. Then lungs sending back in the atrium again. So with the help of pulmonary vein, this blood going back to heart. हार्ट ने भेजा, शुद्ध करके वापस ले लिया. So now pure blood is coming here. Now from here the pure blood is going here. So when the pure blood is coming, this is the chamber number 3 who is receiving the blood, and this is chamber number 4 who is receiving the blood.
So finally blood received here. This is left ventricle. यहां क्यों ब्लड आया? क्योंकि ये सबसे ज्यादा मस्कुलर है. नाउ लेफ्ट वेंट्रिकल विल पंप द ब्लड विद ग्रेट फोर्स. एकदम दबा के ऐसे फटाक. So now the blood will be pumped with the great force with the left ventricle. So in this way, so this is the chamber number 1 who received impure blood. The chamber number 2 where this impure blood gone. Then chamber number 3 where pure blood is coming. And the chamber number 4 where pure blood is reaching. Now this chamber number 4 will pump the blood with the great force. So this blood will be pumped in aorta. Aorta. What is aorta? जैसे आर्टरी जब बड़ी होती है तो एओर्टा, छोटी होती है तो आर्टरी, और छोटी होती है तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? आर्टेरियोल, कैपिलरी, ये सब बोलते हैं. एओर्टा मीन्स बड़ी मोटी आर्टरी. अब हार्ट ब्लड पंप करेगा तो मोटी में करेगा, फिर वो छोटी छोटी पाइपलाइन में चला जाएगा, फिर और छोटी में चला जाएगा. So the left ventricle. That's why many people are suffering with because suppose this left ventricle having responsibility to pump the blood. इसी की जिम्मेदारी है ब्लड को पंप करने की. राइट. अब चलिए, अब आप बहुत महत्वपूर्ण बात को समझेंगे. आप सो नाउ मेकिंग बिगर हार्ट. So this is the right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. So when the impure blood is going from this chamber to this chamber, so here is a one door. यहां पर एक दरवाजा होता है. This is the door. It is made by 3 cusp, 3 दरवाजे. उदाहरण के लिए ये कितने दरवाजे हैं? ये देख रहे हो, 2 हैं, 2 है ना. खोलोगे 2 खुलेंगे ना. आजकल 1 आ गए हैं. इसे बोलते हैं कस्प. कस्प मीन्स डोर. बाई कस्पिड मीन्स 2 दरवाजे. एक ही खुलने वाला सिंगल कस्पिड. 3 भी हो सकते हैं ना. एक ऐसे खुले, एक ऐसे खुले, एक ऐसे खुले, ट्राई कस्पिड. कितने भी बना दो, है ना. So now this is the hole from blood is coming from here, made by 3 door.
This is tricuspid called tricuspid valve. इसका नाम क्या है? ट्राइकस्पिड valve. Okay. Now, if we look at the left side, when the pure blood going from this chamber to this chamber, this is only bicuspid. इसमें दो ही डोर हैं. Bicuspid. The other name of this is mitral valve. There are too many people suffering with the problem of mitral valve. अब प्रॉब्लम क्या होती है? अब ये बताओ कि ऊपर से ब्लड नीचे जा सकता है, नीचे से ऊपर नहीं आ सकता. दिस इज ओनली वन वे रूट. वन वे ही है, उल्टा नहीं हो सकता यहाँ. लेकिन अब मानो कि मुझे इस दरवाजे से बाहर निकलना है, हमेशा आने के लिए दूसरा दरवाजा, जाने के लिए दरवाजा, ये वाला. ठीक है. अब मान लो ये दरवाजा पड़ गया ढीला, ये ढीला पड़ गया. So blood might, so the thing might come back also. अगर ये ढीला पड़ गया, ये ऐसे व्यवस्था होती है एक की तरफ जाए. फॉर एग्जाम्पल, इट विल ओपन लाइक दिस, सो द ब्लड विल गो ओनली वन वे, क्लोज, ओपन. लेकिन कई बार ये वाल्व ढीले पड़ जाते हैं. समटाइम्स देयर इज अ लूजनिंग ऑफ द वाल्व. And the mitral valve is very common. We see get loosed. Then we are telling mitral valve stenosis. mitral valve stenosis. अब ब्लड उल्टा भी दौड़ेगा तो व्यक्ति को चेस्ट पेन होगा. डॉक्टर बोलेंगे कि वाल्व बदलना पड़ेगा. mitral valve रिगर्जिटेशन. रिगर्जिटेशन का मतलब है उल्टी करना. उल्टा, उल्टी क्या होती है? पानी पिया, निकल गया, उसे कहते हैं रिगर्जिटेशन. भाई ऊपर से ब्लड नीचे आ रहा है, नीचे से उल्टी होके ऊपर जा रहा है, वो गलत है ना. तो mitral valve, इफ एनी, देखो वॉल्व जितने भी होते हैं ना, वॉल्व का काम है वन वे ट्रैफिक. जा सकता है, आ नहीं सकता. इफ द वॉल्व गेट लूज एंड इफ देयर इज रिगर्जिटेशन, रिवर्स फ्लो, उल्टा लौट रहा है, दैट क्रिएट प्रॉब्लम. देन going to the doctor and doctor is telling we have to change your mitral valve. हमें क्या चेंज करना पड़ेगा? आपका mitral valve चेंज करना पड़ेगा. In the doctor बोल, for the right side valve we can do the treatment in the right hand. For the left side we can do the treatment on the left hand. If there is a problem with this valve, we can treat heart rate on the right hand. If the problem with this valve, we can treat heart rate on the left hand. रिपोर्ट में सब लिखा रहता है भाई, ट्राइगस्पिड वाल्व हैविंग प्रॉब्लम. इधर का हार्ट रेट लगा दो. अब पेशेंट बोलेगा मुझे छाती में दर्द हो रहा है. आपको कैसे पता चले छाती में दर्द इधर के वाल्व से हो रहा है कि उधर के वाल्व से हो रहा है? इट्स डिफिकल्ट ना विदाउट रिपोर्ट. But if you have report, patient are bringing the report.
There is a problem with the mitral valve, tricuspid valve, this valve, the problem with the multiple valve. So we have to read heart rate. डॉक्टर बोल का हार्ट रेट कहाँ होता है अभी मैं बताऊंगा आपको. प्रॉब्लम इन दिस वॉल्व, जो टीसीएम का हार्ट रेट है वहां नहीं होता, वो अलग, वो दूसरा पॉइंट है, वो भी मैं बताऊंगा आपको. ओके, सो नाउ वी विल सी टू मोर वॉल्व. अब हम दो और वॉल्व की बात करते हैं. बिकॉज देर आर मेनली फोर वॉल्व इन द हार्ट. अब हम दो वॉल्व की और बात कर लेते हैं. अगेन आई एम मेकिंग द हार्ट. So here is the impure blood and here is the pure blood. So the impure blood going to lungs, ये impure blood है जो lungs को जा रहा है. And pure blood coming back to heart. The pure blood coming back to the left atrium. Okay. Then this blood is coming down to the left ventricle. Then left ventricle pumping this blood throughout the body with the help of aorta. This we already understood. ये हमने already समझ लिया अभी, right? Oh. तो अभी अब मैं आपको बताने वाला हूं. This is the pulmonary artery who is taking blood from heart to lungs. एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी वेसल हार्ट से बाहर जाती है उसे कहते हैं आर्टरी. जनरली आर्टरी के अंदर शुद्ध ब्लड होता है, इन जनरली शुद्ध ब्लड होता है आर्टरी, केवल इसे छोड़ के, क्योंकि है पल्मोनरी आर्टरी लेकिन शुद्ध ब्लड नहीं है ना. बट एनी वेसल गोइंग आउट फ्रॉम हार्ट, that is called artery. And any vessel who is coming back to heart, that is called vein. So let's come back here. So pulmonary artery taking impure blood, and here we are having one valve on the entry point, that is called pulmonary valve. इसका नाम क्या है? पल्मोनरी valve है. Then from the pulmonary valve, blood is going to the lungs. लंग को जा रहा है.
Pulmonary valve also made by थ्री cusp. अब जितने भी ये सब थ्री cusp हैं, दिस इज ऑल्सो मेड बाय थ्री cusp. और ये जो तीन cusp होते हैं ना, ये मून जैसे होते हैं, चंद्र जैसे. इसलिए आप कई जगह देखोगे सेमी ल्यूनर वॉल्व, है ना. सेमी ल्यूनर मतलब चंद्रमा जैसे, चंद्रमा आधे आधे cusp. ओके, अभी इतना समझो. जस्ट अंडरस्टैंड दिस. फ्रॉम हियर the blood is going to the lungs with the purpose of purification, but sometimes there is a problem in the pulmonary valve. Blood is going, it should not come back, but suppose valve ढीला पड़ गया तो उल्टा लौटेगा ना. तो उसे कहेंगे पल्मोनरी रिगर्जिटेशन. जैसे भी मेटल रिगर्जिटेशन बोला था, उसे हम क्या बोलेंगे? उल्टा ब्लड दौड़ रहा है, तो पल्मोनरी रिगर्जिटेशन. नाउ वो लॉस्ट बॉल्व, एक बाल्वर और हम समझते हैं, तो हमारे चारों बॉल्व खत्म हो जाएंगे. फिर in the last, this aorta pumping blood throughout the body. So at the entry point of aorta, we are having one valve that is called aortic valve. इसे हम कहते हैं aortic valve, right? ये भी तीन कस्प का बनता है, चंद्राकार. So I can tell you one thing here. There are mainly four valves in the heart. Tricuspid valve, bicuspid valve. The other name is mitral valve. So suppose this is the pulmonary artery. Pulmonary valve. This is semilunar. Tricuspid. तीन कस्प का बना हुआ. ऐसे तीन चंद्र जैसे बनते हैं, एक चंद्र, दो चंद्र और तीन चंद्र, ऐसे तीन चंद्र बनते हैं. एंड दिस इज बिफोर द एओर्टा, एओर्टिक वॉल्व. दिस इज ऑल्सो सेमिल्यूनर वॉल्व made by three cusp. So we can see in any valve there might be problem that is called stenosis. वो ठीक से बंद नहीं होता, थोड़ा खुला रह जाता है. So just I told you, if you want to read the tricuspid valve heart rate on the right side, if you want to read the bicuspid valve heart rate on the left side, if you want to read the pulmonary valve heart 9 on the right side, and if you want to read the aortic valve heart 9 on the left side. कितना मजेदार बात है ना. हार्ट 9 और हार्ट 8 तो हमारे चारों पॉइंट लगा दिए, तो चारों बॉल का ट्रीटमेंट. हार्ट 9 यहां पर है, ये हार्ट 9 है ऑन द कॉर्नर ऑफ नेल. लेफ्ट में लगाया तो एरोटिक वाल्व हो गया,
राइट में लगाया तो पल्मोनरी वॉल्व हो गया। डॉक्टर बोल का हार्ट रेट कहाँ है? इफ यू फॉलो दिस गैप in the last here, if we follow this gap in the last, this is the location of heart rate. With the junction of fourth and fifth metacarpal bone here, that is the location of heart rate. Putting on the left side, mitral valve. Putting on the right side, tricuspid valve. चारों valve का treatment कर दिया. Now you, whenever any patient coming with a cardiac report, heart report, bringing ECG, cardiogram, and you can see in the report, you will find some valve having some problem. Sometimes you will see aortic valve, sometimes you will see pulmonary valve, sometimes mitral valve, sometimes tricuspid valve. Four valve only. टॉन साइडेड तो डिपेंड करता है भाई, टॉन साइडेड। हाँ समझ सकते हैं कि ट्रिपल बॉर्मर 3 यहाँ पर और उसके अपोजिट हार्ट 8। Now we will see, conduction system of the heart. Everyone knows that. जानते हो कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट? कितने लोग नहीं जानते? खैर ज्योतिका जी तो जानती हैं अच्छी तरह से, बाकी सबने सुना सुना होगा लेकिन ध्यान नहीं आ रहा होगा ना। ये बताओ कि हार्ट में जो धड़कन होती है ना वो कहाँ से आती है? दिल कहाँ से धड़कता है? जब कोई लड़का लड़की को देखता है ना तो वो धड़कता है ना। उसको देख के क्यों धड़कता है? when you're looking someone you like, कौन धड़काता है? when you are looking someone you love, you have one generator in your heart, generator get activated। जब आपने किसी को देखा, आपके हार्ट में एक जनरेटर होता है, वो एकदम तेज चालू हो जाता है और आपकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। चोरी करने में भी धड़कता है, ये ऐसी बात सच है। ओके, so a scientist has done lots of research on the heart to find out why the heart is beating, for why the heart is beating. So they found in the heart there is a one generator। हार्ट के अंदर एक जनरेटर होता है, उसे कहते हैं पेस मेकर। दैट इज कॉल्ड पेस मेकर। सो लेट्स सी हियर। बड़ी मस्त हमारे, जब मैं व्हेन आई वाज इन द 12th स्टैंडर्ड, our sir used to tell this story very nicely. I like this story. I will tell you. So this is the heart. We are talking about the conduction system of heart. कंडक्शन मीन्स, कंडक्शन का मतलब क्या होता है? कंडक्शन का मतलब होता है कि जैसे एक बिजली का तार लटक रहा है, उसमें बिजली है, उसे पकड़ लो तो क्या होगा? कुछ तो होगा ना ऐसे 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 ऐसे। वो कंडक्शन है, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। बिजली गिरी और एकदम से करंट, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। कंडक्शन मीन्स, है ना, कहते हैं ना, दिस इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने लोहे की एक
छड़ डाल दी करंट वाले प्लग में, that is conduction. But you are putting something different like plastic or something which is bad conductor, you will not feel the current. Conduction system, how the current is flowing. So this is called conduction system of the heart, how the current flow in the heart. So heart is doing beat, heart is beating. हार्ट कैसे बीट करता है? So scientists has found that in the right atrium there is a one generator. This generator is called sinoatrial node or pacemaker. And because of that, or we are telling SA node, other name of it is SA node. This is located in the right atrium. Because of that, heart is beating 60 to 100 beat per minute. हार्ट की धड़कन 60 से 100 के बीच में चलती है. तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको निकाल दिया. लेट्स रिमूव इट, देन सी, देन फाउंड स्टिल हार्ट इज बीटिंग. अभी भी हार्ट धड़क रहा है. देन दे फाउंड, and this is the we know upper part is the atrium and the lower part is ventricle, that we know. At the junction of atrium and ventricle, there is a one another generator that is called AB node. AB node means atrioventricular node. AB node means atrioventricular node. Then scientists have seen heart is still beating after removal of AC node, but the number of beat are less, 40 to 60 beat per minute. हार्ट बीट अभी भी कर रहा है, भले बीट के नंबर थोड़े से कम हो गए हैं. तो उनने कहा चलो इसको भी निकाल दो, इसको भी निकाल दिया. देन दे फाउंड हार्ट स्टिल बीटिंग, अभी भी हार्ट धड़क रहा है. देन दे फाउंड there is a some bundle, there is a some structure all around the, like bundle like nerve fiber, the structure like nerve fiber all around, small fiber all around, they call bundle of His. Bundle of His. Okay. So in the right chamber going, they are calling a right bundle branch. In the left side, they call left bundle branch. यानी कुछ तार हैं जिनमें से करंट पैदा हो रहा है. जैसे मान लो एक तार का गुच्छा है, बंडल है, उसमें से करंट पैदा हो रहा है. राइट हार्ट में जाता है, उसे कहते हैं राइट बंडल ब्रांच. Many patients are coming in the report, it's written
बंडल ब्रांच ब्लॉक, बी 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 इन द रिपोर्ट इज रिटर्न। उनकी प्रॉब्लम ही होती है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? कि वो बंडल ब्रांच ब्लॉक होती है, वहां करंट ठीक से नहीं जा रहा है, जैसे कोई तार है बीच में से थोड़ा सा कनेक्ट नहीं कर रहा है, ऐसे रिपोर्ट्स में लिखा रहेगा कुछ ना कुछ। बट राइट नाउ हम कमिंग, पहला जनरेटर निकाल दिया, तब भी हार्ट धड़क रहा था। ए बी नोड वाला दूसरा जनरेटर निकाल दिया, तब भी हार्ट धड़क रहा है, हार्ट स्टिल बीटिंग, बिकॉज ऑफ बंडल ऑफ हेज। So because of this bundle of his, heart is still beating, but beats are less 20 to 40 beat per minute. अभी भी हार्ट धड़क कर रहा है। साइंटिस्ट है रिमूव्ड दिस ऑल्सो, चलो इसको भी निकाल दो, फिर देखते हैं। ठीक है, देन दे फाउंड हार्ट स्टिल बीटिंग in the wall of the heart. In the wall of the heart there is a small fiber they called Purkinje fiber. They also create 20 to 40 beat per minute. Purkinje fiber, इसको भी निकाल दिया, तब भी हार्ट धड़क रहा था। तो बोला कि हार्ट की हर सेल ही धड़कन वाली होती है। The each and every cells of the heart is very specialized cell, and सब निकाल दो तब भी वो थोड़ा तो धड़केगी। आप देखो ना कि हार्ट 24 घंटे धड़कता है ना। उसमें हम सो भी लेते हैं, हम अपना काम भी कर लेते हैं, फिर सो जाते हैं। हार्ट कभी आराम करता है? उसके एक आराम का अलग तरीका है, वो बैचेस में होता है, लेकिन काम तो हमेशा करता रहता है ना। इधर आपका योर लिवर इज गेटिंग रिलैक्सेशन, योर नॉट ईटिंग फूड, योर लॉर्ज इंटेस्टाइन इज गेटिंग रिलैक्सेशन, योर स्लीपिंग, योर ब्रेन इज गेटिंग रिलैक्सेशन, but heart is not getting relaxation. 24 hours it's working. Can you imagine how much efficiency is there with the heart? Each and every cells of the heart is having that small micro generator, है ना? So that's why heart cells are very specialized. एक सेल भी हार्ट की होती है, उसमें भी धड़कन है अपनी। This is called conduction system. So what is happening? Sometime patient will be coming with the 40 beat per minute or the 50 beat per minute. It means SA node is not working. This first generator is not working. Then doctor are telling, okay, do the pacemaker implantation, कि pacemaker डालना पड़ेगा, क्योंकि बीट कितनी हो गई है? 50 बीट पर मिनट चल रही है। तो हमें क्या डालना पड़ेगा? डॉक्टर बोल रहे हैं कि पेसमेकर डालना पड़ेगा। आपकी हार्ट बीट कम हो गई है। तो हमारा यहां पर होता है हार्ट 6A, अभी बताऊंगा लोकेशन। दैट इज कॉल्ड पेस मेकर पॉइंट। उस पर स्टार मैग्नेट लगा दो तो हार्ट की बीट इंक्रीज हो जाती है। कई लोगों ने तो लगाया होगा, है ना? पवन गोयल जी ने लगाया होगा 100%, और जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उन्होंने लगाया होगा। हार्ट 6A, है ना? पवन गोयल जी यूज किया? हम्म। मीता जी आपने किया यूज? किया ना? हार्ट 6A कहाँ होता है अभी मैं बताऊंगा मैं। हार्ट 6A कहाँ होता है? है ना मजेदार बात हार्ट की? ये तो हो गया कि आप लड़ने गए युद्ध में, आपका एक हाथ कट गया तब भी लड़ रहे हो, दूसरा हाथ कट गया तब भी लड़ रहे हो।
गर्दन कट गई तब भी लड़ रहे हो, आधा धड़ कट गया तब भी बचा हुआ आधा धड़ लड़ रहा है ना। एक पैर कट गया तो पैर उछल उछल के लड़ रहा है, वो हाथ उछल उछल के लड़ रहा है, जो जो पार्ट टूटे वो उछल उछल के लड़ रहे हैं। कितना मजेदार सब ये हार्ट के हैं, ऐसा ऐसा हार्ट है भाई। अब इंग्लिश वाले बोलेंगे उनको नहीं समझ में आया, समझने वाली कोई बात नहीं इसमें। ओके, मीन्स each and every part of the heart, each and every cells of the heart is having that generator. Each and every cells of the heart is having generator. It means the first generator is SA node. The second generator is AB node. The third generator is bundle of His. The fourth generator is Purkinje fiber. The fifth generator, each cells of heart. The first generator in the right atrium and creating 60 to 100 beat per minute. The second generator at junction of atrium and ventricle, creating 40 to 60 beat per minute. The third generator is in the right ventricle and left ventricle, so called right branch, left branch, creating 20 to 40 beat per minute. Purkinje fiber in wall of heart, or we can tell in the ventricular wall, जो वेंट्रिकल की वॉल होती है ना उसमें होता है. इट इज ऑल्सो क्रिएटिंग 20 to 40 beat per minute. इसका कुछ each cells of the heart is having some vibration, some beat. Okay, so ऐसे node is called pacemaker. तो पेसमेकर आजकल चलता है ना, पेसमेकर. अब इसमें एक चीज और, generally these all generator on all the time. For example, the SA node will produce the electricity. It will activate the AB node. AB node also will start producing the electricity. Then bundle of is all start producing the electricity. Purkinje fiber will produce all the generator working together. अभी तो रिमूव करने वाली कहानी हमने देखी थी, लेकिन सारे जनरेटर काम कर रहे हैं. ऊपर से करंट आया, एवी नोड ने आगे बढ़ा दिया, फिर उसने बंडल ऑफ ने आगे बढ़ा दिया, परकिंजी फाइबर ने आगे बढ़ा दिया. सारे एक साथ एट ए टाइम सब काम कर रहे हैं, ऑल वर्किंग टुगेदर. सो अभी आजकल, पहले आता था ना, अभी पेसमेकर जब जाते हैं ना डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलते हैं ओके नाउ योर पेसमेकर इज नॉट वर्किंग, योर साइनोट्रियल नोड इज नॉट वर्किंग, यू नीड सर्जरी and you need to implant the pacemaker. Okay, don't worry. Nowadays, pacemaker coming with very good quality with a 5-year warranty. Okay. इनिशियली द पेसमेकर, पहले जो जैसे हम लेते हैं ना, कोई फ्रिज लेते हैं, टीवी लेते हैं, उसमें वारंटी आती है ना, ऐसे पेसमेकर की भी वारंटी आती है. तो एक पेशेंट आके बोलता है डॉक्टर साहब नाउ आई हैव गॉट वेरी गुड पेसमेकर विद अ 10-year वारंटी, है ना. 10-year वारंटी डाल के 10 साल की वारंटी वाला पेसमेकर डला है. बड़ा खुश है भाई कि 10 साल की वारंटी मिली है. कुछ भी होगा तो, मैंने कहा कुछ भी होगा तो डलेगा बाप, वो वाली वारंटी नहीं है. कुछ होगा तो मेडिकल फील्ड में तो ऐसा है, चाहे वारंटी हो कुछ नहीं भी हो, अगर बीमार पड़ोगे तो जेब तो फिर से डेली करनी पड़ेगी आपको, है ना.
फ्रिज जैसा सिस्टम नहीं है कि खराब हो गया, जैसे मैकबुक हमने 2 साल का उसमें एक गारंटी प्लान ले लिया, अब 2 साल में कुछ भी डैमेज होगा तो मैकबुक में वो थोड़ा सा पैसा लेके चेंज कर देंगे। वो नहीं है पेस मेकर में भाई। But with the science advancement, this is true. Previously, pacemaker was working for 1 year, 2 year. Now, pacemaker is working 10 plus year, even throughout the life. Person has to take care. थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा, है ना? कोई नई चीज डाली है. What we have to remember as acupuncturist, if the person is having pacemaker, don't give electric stimulation. If you are giving electric stimulation from outside, doctor has put generator. It will not able to. मेरी 42 है भी है, क्या मतलब है इसका? सर मेरी 42, क्या 42 है आपकी? 42 ईयर्स की वारंटी क्या है? बेदी जी आप क्या बोल रहे, समझ नहीं आया, जरा समझाइए। कहाँ गए बेदी जी? हाँ, अनम्यूट योर सेल्फ। मेरी 42 है भी है, क्या है, क्या बोल रहे हैं, क्या मतलब है? हार्ट बीट आपकी 42 है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। टिल यू डोंट हैव एनी इशू, ओके, डोंट वरी फॉर दैट। ओके, सो आई विल टेल यू द लोकेशन. So remember one thing, first you should know the location of heart 7. हार्ट 7 की लोकेशन पता होना चाहिए. लंग 9 इज हियर, पेरिकार्डियम 7 इज हियर, heart 7 is this side. But where? We can feel the tendon here. If you feel one tendon here, can you feel this rope like structure? यहां पर देखिए आपको एक रस्सी जैसी मिलेगी कोने में, पकड़ के देख लीजिए एक बार, ऐसे ही मिल रहा है? इसके अंदर है हार्ट 7, बाहर नहीं है. हार्ट 7 का है, इसके अंदर है. हार्ट 7 लोकेटेड inner side of this tendon. Got it? Now from here, if I go half tone down, that is heart 6. अभी हम डॉक्टर बोल के पॉइंट पे आए नहीं है, थोड़ा इंतजार करिएगा. हार्ट 7, हार्ट 6, हाफ टोन डाउन, इनके बीच में है हार्ट 6 से, है ना? चलो एक इमेज में दिखा देते हैं आपको. ये देखिए इमेज में आपको सब समझ में आ जाएगा. ये पीले रंग का हार्ट 7. Now we can see there are multiple points of the heart with a half tone distance. Heart 7, heart 6, heart 5, heart 4. All point with a half tone gap. Half tune, half tune, half tune. Heart 7 located on the wrist. Our focus is heart 7 and heart 6. In between, we are having the point heart 6A. That is the point of pacemaker. ये हमारा पेसमेकर का पॉइंट है.
If the person is suffering with the tachycardia, means the high heartbeat, bradycardia, but the low heartbeat, in both conditions we can use heart 6A. ठीक है, समझ में आ गया लोकेशन? Now I will show you in another image so that you will understand very clearly. Look at here. Let's see this image. This is the wrist. On the side of the wrist, this is the one tendon of flexor carpi ulnaris. ये टेंडन है, इसके अंदर की तरफ होता है पॉइंट, ये हार्ट 7। इसलिए मैंने कहा कि रस्सी जैसा फील करो और फिर अंदर चले जाओ। लेट्स सी वंस अगेन। Look at here. We can see this is the tendon, and inside the tendon we are having this point. That is the location of heart 7. तो हमारी जो ये अल्नेरिस मसल, फ्लेक्सर कार्पे अल्नेरिस मसल का टेंडन होता है ना, ये इसके इनर बॉर्डर पर है हार्ट 7। हाफ टून डाउन हार्ट 6, इसके बीच में हार्ट 6 है। हार्ट बीट बढ़ गई है तो लगा दो, हार्ट बीट घट गई है तो लगा दो। साइनो एट्रियल नोड को अगर कम हो गई है तो टर्न कर दो, ज्यादा हो गई तो सेडेट कर दो। नहीं समझ में आ रहा तो इवन मेथड कर दो, डू द इवन मेथड, और यू टर्न इफ यू वांट टू इंक्रीज द हार्ट बीट, सेडेट इफ यू वांट टू डिक्रीज द हार्ट बीट। तो सारे हम देखेंगे सभी के पॉइंट्स। कंडक्शन सिस्टम समझ में आ गया? अंडरस्टूड द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट एवरीवन? SA node, AB node. What is pacemaker syndrome? Pacemaker syndrome, when SA node is not working, the heartbeat is reduced and heartbeat in between 40 to 60 beat per minute. But many people are doing lots of yogasana, breathing pranayama. Their heartbeat is down, that is naturally down. If the people do lots of pranayama, maybe heart rate will be 60 beat per minute. But it is a 40-45 beat per minute, then you can stimulate this point. Yes, Sarabjit ji. सर जो हमने थायराइड का प्रोटोकॉल सीखा है, TW1B, TW2, ST10, दिस विल बी यूज फॉर हाइपो एंड हाइपर कंडीशन बोथ। यस, ये वाले पॉइंट ऐड कर देना सब में। अगर एक को हाइपो है तो उसको ये लगाया, हाइपर लगाया तो नॉर्मल हो जाएगा दोनों का। इज इट ओके? और सर अगर ऑसिपिटल में पेन है या डिजीनेस है, देन वी विल यूज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पॉइंट। अगर डिजीनेस है तो हम ईयर का, अगर डिजीनेस है राइट ऑसिपिटल में नहीं तो डिजीनेस तो ऑक्सीपिटल में होगी क्या? तो फील्ड पेन वहीं से आ रहा है, रेडिएशन वहीं से आ रहा है। अगर किसी को पेन ऑक्सीपिटल एरिया से आ रहा है और साथ में डिजीनेस भी है, इट माइट बी ड्यू टू द सर्वाइकल, इट माइट बी ड्यू टू द ईयर, है ना?
मे बी हम इसको डिस्कस करेंगे आगे चल के, है ना, क्योंकि अभी तो दो कारण हो सकते हैं, देखो। पहला कारण हो सकता है, फर्स्ट माइट बी कनेक्टेड विद द सर्वाइकल। compression of vertebral artery in the cervical area, which is हाँ हाँ। supplying blood to the brain. हमारे ब्रेन को दो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड वर्टिबल आर्टरी। तो हो सकता है कि वर्टिबल आर्टरी का कंप्रेशन हो, इसलिए चक्कर आ रहे हैं। दूसरा, ईयर के कारण भी आ सकते हैं। अगर ईयर के कारण है तो और भी कुछ लक्षण मिलेंगे, तो ईयर का प्रोटोकॉल लगाना पड़ेगा। और अगर गर्दन के कारण है तो गर्दन का लगाना होगा प्रोटोकॉल। अगर नहीं समझ में आता तो दोनों का लगाना पड़ेगा फिर। इन तो ऑल पिट्यूटरी ग्लैंड जो भी 3 लेवल है, वी यूज सर्वाइकल ना, सर्वाइकल पॉइंट्स वी यूज, सो दैट विल आल्सो हेल्प ना। cervical point be used because they are the ganglion. Ganglion या means they are supplying this area. That is for the purpose to make a good supply all या around. See, suppose we are using this point, so it is supplying good here. All the like nerve supply is proper in this area, in this area, and this area. That's with that purpose we are using cervical ganglion point. But regarding the vertigo, sometimes it might be connected. So, but cervical ganglion point are useful for ear as well as for brain also. So definitely they point will be useful, but we have to add more point. अगर कान से आ रहा है तो हमें कान के कुछ पॉइंट तो जोड़ना पड़ेंगे इनर ईयर के। हाँ हाँ, और अगर सिर्फ वर्टिबल आर्टरी के सर्वाइकल का ही है मेन, आई थिंक सर्वाइकल ही है। सर्वाइकल का है तो सर्वाइकल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, वो तो हम अभी सीख जाएंगे आगे चल के। ओके ओके, थैंक यू। जी। अभी आगे चल के हम सभी का ट्रीटमेंट देखेंगे। ऐसे नोड, ए बी नोड, बंडल ऑफ हिस, सबका ट्रीटमेंट आएगा ना। एक एक पार्ट डॉक्टर बोलने सबके पॉइंट दिए हैं, ये इसका, ये इसका, ये इसका, इसका ना। हाँ जी, वन, यस सर, हाँ, 1 मिनट, ओनली सर 1 मिनट। हाँ सदाब जी। सर हमारा एक सवाल था सर। हम्म। सर एक पेशेंट है सर, उनके ईओपी जो आपने पॉइंट बताया था, हम्म। तो सर वहां से लेके यहाँ C5 तक उनका ऑपरेट हुआ है। हम्म। सर उनको परेशानी ये आई थी कि उनका बैलेंस बिगड़ रहा था उनका, तो जब डॉक्टर्स के पास गई तो उन्होंने कहा कि आपके पानी आ गया है यहाँ पर इधर। उसके हाँ। बाद उन्होंने ऑपरेट किया। ऑपरेट कराने के बाद सर उनका बैलेंस जो है और बिगड़ गया सर। तो लगभग 8 महीने हो चुके हैं और हमारे पास आई हैं अभी वो। तो हम्म। हम ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या बैलेंस उनका जो आउट हुआ वो ठीक हो सकता है? हाँ, डेफिनेटली हो सकता है, अच्छा सर। बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि वो तो प्योरली उन्होंने सर्वाइकल एरिया से छेड़खानी की है। जी जी जी। और सर्वाइकल एरिया जो द नर्व फ्रॉम द सर्वाइकल, if because upper cervical can be divided into parts, upper cervical and lower cervical. Upper cervical is supplying connected with the brain. If there is any problem in the upper cervical, it will create dizziness, vertigo, and all. If there is any problem in the lower cervical, it will create problem, numbness, tingling, and all things in the arm. Okay, we can do, but we have to make the protocol very properly, right? Because we have to understand each and everything, then only we can create the protocol. Okay, vertigo and dizziness is a very important topic, but we can treat, definitely, there is no doubt. तो सर उस पे जो प्रोटोकॉल लगाएंगे वो सर्वाइकल रीजन और लंबर के दोनों पे लगाएंगे? लंबर में प्रॉब्लम है क्या उनको? लंबर में सर उनके डिस्क बल्ज, तो उसके तो हम ट्रीटमेंट करके हमने उनको ठीक कर लिया, लेकिन उनका लेफ्ट लेग जो है वो उसका बैलेंस बहुत आउट है। जो उनकी एड़ी होती है उसमें कह रहे हैं कि उनकी गुद्दी जो है सुन है, पूरा नमनेस ज्यादा है। Yeah, that can be treated. Yes, no issue. Numbness, tingling, it can be treated very nicely. You focus on the cervical and lumbar both.
because lumbar creating problem in the legs and cervical is creating problem in the arm as well as in the legs. Cervical हाथों में पैरों में दोनों में प्रॉब्लम कर सकता है, लंबर के जी जी, द्वारा पैरों में पैरों बहुत में ज्यादा होता है। है। हाँ तो बिल्कुल डेफिनेटली वी कैन वर्क, यस, एंड पेशेंट विल गेट आपने वेरी जो गुड। सर्कुलेशन जो आपने सर सीआई बताई थी सर्कुलेशन मेरिडियन में, जो अभी बड़ा बताया था आपने, तो क्या उसके पॉइंट भी हम ऐड कर सकते हैं उसमें, सर्कुलेशन हाँ, मेरिडियन के? पैरों का जो स्टीयरिंग ठीक करने का, यस डेफिनेटली improve the circulation of the leg with the treatment what we have discussed. तो सर सारे प्रोटोकॉल एक साथ हम जोड़ सकते हैं क्या? Yes, if there are too many points, then we can make the batches. Suppose there are too many points, then we can create the batch. Like एक बार today सर I will अपॉर्चुनिटी बस। today I will treat with this. Maybe the next sitting I will take this. In this way you can make the batch. If there are too many points. ओके सर, एक बात अपॉर्चुनिटी Hmm. सर, किसी का अगर हाथ नहीं उठ पा रहा है ऐसे करके, उसमें पकड़ उसकी खत्म हो चुकी है और वो बहुत कम पकड़ नहीं पा रहा है किसी चीज को, तो सर उसके लिए हम कौन से मेरिडियन पे काम करेंगे? Actually, we have to work in entire shoulder complex. When the person is having any problem with the shoulder, we have to work because here we have joint, shoulder joint that is called glenohumeral joint. But we have to work on this. Suppose if there is a problem here, that is sternoclavicular, यहाँ पर problem है, right? So this bone like this, यहाँ पर jam है. Now, if it is not going like this, so how will you lift your shoulder if it is not going back? So you have to work on SC joint. You have to work on the shoulder joint or glenohumeral joint. You have to work on scapula. You have to work on entire chain if you want to work. That is called shoulder complex. Okay, because there might be, if even this joint is involved, the person will come with a problem of this, है ना? ऐसा होगा। तो इसलिए जब शोल्डर हम की बात करते हैं, हमें शोल्डर कॉम्प्लेक्स की बात करनी पड़ती है, हम एक की नहीं बात कर सकते। हमें उसे फुल बोलते हैं स्कैपुलो थोरेसिक जॉइंट, स्कैपुला को भी ठीक करना है, स्कैपुलो स्कैपुला और थोरेसिक के बीच का स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, सुप्राह्यूमरल जॉइंट, सब पर वर्क करना है। तो अब रिगार्डिंग मेरिडियन, अब आपका प्रश्न है कि मेरिडियन चूज करना है, तो हम देख सकते हैं कि द रूट ऑफ द पेन में कौन सा मेरिडियन, उसको मेरिडियन को चूज कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ मेरिडियन की भाषा में पूछना चाहते हैं, आगे से एलआई मेरिडियन है, यहाँ से ट्रिपल वार्मर है, और पीछे जाओगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन है। So Li, triple warmer, Si. In this way, you can select the meridian. For the front side, Li. For the back side, Si. From between, triple warmer. So meridian style, we can choose in this way. ओके सर, थैंक यू। Okay. Okay, done for today. Now we'll see you tomorrow morning. कल सुबह मिलेंगे. Thank you so much and good night. Subramaniam ji, yes, please. Sir, in the morning classes and all, we were speaking about triple warmer 16, 16A, 16A1, A2, 17, 17.1, 17.2 and all. In such cases, when we have to give points for all these things, can we put a mate strip together? Okay, so now if you are having some difficulty to understand exactly, then you can put method. But if you want to become specialized doctor, specialized acupuncturist, then you should learn the special effect of each point. Sir, Initially, you can do whatever you think. the problem is not for me. No, I can understand your The point. problem is, sir, many times patient will come once in a week to me
and rest of the time they put it on themselves. Can I ask them to put a match strip there? I can identify it's the way देखो you जो have ट्रीटमेंट shown हम it is सीख रहे हैं ना, not मैं आपको बता रहा हूँ, whatever we are learning, that is for acupuncturist. okay, sir. But there is no problem if you are guiding your patient, but then you have to decide how you will guide. That depends on you only. Because Oh, we cannot discuss in the way that how the patient will put. Okay, that is not possible for us. But that depends on your own personal creativity. How can you make understand patient is not coming every day, so that you can do as per your. Many people are doing, they are telling, but there are too many points. We are feeling so much difficulty to understand how the patient will understand. that is true, sir. But that is also true. We have to tell patient will, you have to tell okay, 3, 4 or 10 points to the patient. As a acupuncturist, you have to learn entire. Yes, लेकिन yes, एक बात है कि डॉक्टर बोल कितना लेंदी है ना, पूरा तो correct. इसी में सबको चक्कर आ रहे हैं अभी अभी, है ना, कमजोर। Sir, one more experience, sir. क्या? The other day when I was attending a class, I asked about my daughter who had stomach pain and vertigo. You said I'm not going to speak any protocol now. See, Day before yesterday, I applied 17-1, which is for 17 one. TW 17-1. And she got relieved of vertigo, sir. Very nice. 17. This is very good point for vertigo. Very good. Yes, sir. You had Because yeah, it is connected with inner ear. internal ear. Yes, sir. Very nice. Good, good. Thank you very much, sir. The way you are teaching is really excellent, sir. Please continue in the same way, sir. Okay. Sure, sure, sure. Okay. Thank you. Good night. Sleep well. Now see you tomorrow morning. Then tomorrow evening. We'll see tomorrow 2 times. See you. Good night. Bye. Good night, sir.